नमस्कार वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। सो लास्ट क्लास रे आम क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर रो किछटा पार्ट पढ़ी। सो आम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रे आम पढ़ी कि 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थाए। क्रॉप्स जोटा कि रेनी सीजन में प्रोड्यूस करा जाए जहाँ को खरीफ क्रॉप्स कह जाए। क्रॉप्स जोटा कि विंटर सीजन में प्रोड्यूस करा जाए जहाँ को कि रबी क्रॉप्स कह जाए। और क्रॉप्स जोटा कि समर सीजन में प्रोड्यूस करा जाए। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रो नेक्स्ट पार्ट को आम आगु को बढ़िया कि केपरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करा जाए। सो तार नेक्स्ट पॉइंट होची बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्रॉप प्रोडक्शन पे बेसिकली फार्मर्स को कौन करिया पे पड़े आम तार नेक्स्ट पॉइंट रे पढ़िबा। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। So the answer to this question is that कि paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. So paddy रो growth पाई हमको बहुत सारा पानी रो आवश्यकता थाए। So rainy season ने सही पानी टा automatically from the nature हमें पाई जाओ, but winter season ने सेति की पानी रो बंदोबस्त करा जाए पारे नहीं, because nature हमको सेति की पानी produce करी पारे नहीं। So as paddy रो growth पाई a lot of water requirement थाए, तो सेति पाई it is grown only in the rainy season. So next step रे हमें पढ़िबा कि cultivation of the crops involves several activities undertaken by the farmers over a period of time. तो किछि समय पाए किछि period of time पाए farmers माननको किछिटा steps नवा पाए पड़े to cultivate crops. So these activities and tasks done by the farmers are called as agricultural practices. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होची कौन फार्मर्स माने जहाँ करती इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द व्हिच आम क्रॉप्स पाऊ बिकॉज जहाँ प्रोसेस फार्मर्स मान द्वारा फॉलो करा जाए क्रॉप्स प्रोडक्शन पाई से सब प्रोसेस आम निजे जो किचन गार्डन करूँ बा किसी गोटे फ्रूट या वेजिटेबल आम घरे ग्रो करूँ से प्रोसेस आम भी फॉलो कर किंतु फार्मर्स मान किछिटा डेडिकेटेड प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़े सो दैट से ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्शन करेंगे सो दैट आम देशर खाद्यर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से आम देखा। सो 7टा स्टेप रे एटा को रिप्रेजेंट करा जायछि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का को कहती। सो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एटा होछि 7 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जोटा कि फॉलो करा जाए फार्मर्स मानक द्वारा फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ crops or vegetables or fruits whatever they are doing. So first step आम आगू जावा कि फर्स्ट पॉइंट रे कौन थिला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो आम आगु पढ़ीचे कि प्लांट रो ग्रोथ पाई सॉइल गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर बिकॉज थ्रू सॉइल प्लांट तार रिक्वायर्ड वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे थ्रू इट्स रूट्स टू इट्स लीव्स। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। सो सब गोटे इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रोज कौन टू टर्न द सॉइल एंड टू लूजन इट। तो सॉइल टाकू क्रॉप प्रोडक्शन पाई के उपयोगी बनैबा होची इंपोर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रो। व्हाई इट इज नेसेसरी टू लूजन द सॉइल बिकॉज दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. So soil टाको आम जदि लूज कर दे पारिबा लूजन कर दे पारिबा तो सेटा हेल्प करिबो रूट्स माननकु गछर चेरा माननकु भल भाबरे ग्रो करिबा पई माटी भितरे एंड भल भाबरे मिनरल्स वाटर जहाँ भी सब तांको एब्जॉर्ब करिबार थाए करिबा पई हेल्पफुल होइताय। Now the question arises, why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? Because the loosened soil helps in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. So दुईटा टर्म आम एठू पाइले गोटे होचे earthworms और गोटे होचे microbes। ए दुईटा जाक जो माटी भितरे थांती से माने माटी को फसफसिया बा लूजन करबा पई हेल्पफुल हेतांती। सो दुईटा पॉइंट आपण टर्म्स लिखि दी परिबे गोटे होची
earthworms and microbes. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. सो दीटा इंपोर्टाट जिनस हूँ कौन अर्थवर्म्स जो मैंने था आ माइक्रोब्स जो मैंने था से माटी को फसफसिया कर लूजन कर हेल्पफुल होती जोटा कि क्रॉप्स मान ग्रोथ पर इंपोर्टाट फैक्टर. सो तापर नेक्स्ट आम देखा कि व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड. As I have already learned that the soil contains minerals, water and air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. आम जानते मरला मृत प्राणी आ गछ जहाँ भी था से डिकम्पोज हो जाती से माटी नहीं जो कहते ना माटी जन्म हो जाए माटी मिसो. सो दैट इज द थिंग से माटी ही मिस जाती. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. तो से सॉइल को सेटा को रिलीज कर दियंती एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. सो मृत पशुपक्षी बा मृत गछ मानकर जहाँ सब न्यूट्रिएंट्स थाए से सॉइल रो अगेन मिसी जाती एंड सेटा हेल्पफुल हो जाए फॉर प्लांट्स टू एब्जॉर्ब इट अगेन. सो दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो इटसेल्फ. So next time पढ़िबा since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. So soil को loosen करिबार main motto होची एटा कि nutrient rich soil टा हमर गछ पाखरे जेमति पहुंची पारिबा गछर roots पाखरे जेमति पहुंची पारिबा so that plant can use this nutrients easily. Thus, turning and loosening of the soil is very important for cultivation of the crops. So first step आम जानिले कि preparation of the soil रे loosening of the soil टा गोटे important factor. से दीटा organism आमको help करती. गोटे होची earthworms and another one is just think and tell me microbes. Okay, so दीटा important जिनस जोटा कि दीटा इंपोर्टाट ऑर्गेनिज्म जोटा कि फार्मर्स मानकर फ्रेंड और सॉइल को लूजन करती एंड हेल्पफुल करती फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टिल्टिंग और प्लाउइंग एंड दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ. Plows are made of wood or iron and if the soil is very dry it may need watering before plowing. So हल लंगल जो यूज करे जे आम जानी माटी को खोलिकी फसफसिया करने ओडिया कहया गले जदि आम सिंपल यहाँ को बुझेबा आईटा काठरे कि लुहारे या सॉइलटा जब बहुत ड्राए थाए ताले आमे ताकू खोलिबाई कि कष्टकर होता है. तो सीटा को प्रथम पानी यूज करके आग नरम कर दि जाए तापर तार खोलिबा हल लंगल लगे खोलिबा माटी को फसफसिया करने टिल्टिंग और प्लाइंग करा जाए. The plot field may have big clumps of soil called as crumbs and it is necessary to break this crumbs. Crumbs माने कौन माटी गुड़ाक टेला टेला होकर रही जाती गोटे जगह रुंड होकर रही जाती जोटा को यूज करने कष्टकर हुए. तो सेगुड़ा को भांगिकी फसफसिया करदे यूजफुल होता है फार्मर्स मानी टू मेक द क्रॉप ग्रो. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of the soil is done with the help of a leveler. So ये आम किछटा जिनस जोटा कि आम सॉइल को हेल्पफुल करने फॉर प्लांट ग्रोथ यूज करा जाए. किछटा वर्ड्स आम ये पढ़ले जोटा कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज करा जाए जमती कि प्लॉर यूज करा जाए लेवलिंग पे लेवलर यूज करा जाए. समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर tiling. This helps in proper mixing of the manure with the soil. The soil is moistened before sowing. Sowing माने कौन बीज बुणीबा जो क्रॉप तैयारी करने चाहूँ तार बीज बुणा जाए से. मैन्योर माने हूँ कौन सार दि जाए गछर ग्रोथ पाई. इट इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. सो नेक्स्ट टाइम पढ़ा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield and this is done with the help of various tools and the main tools used for this purpose are plough, hoe and cultivator. तो आम इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन यूज हुए माटी की चाष उपयोगी बनवाई से विषय आम ये पढ़ले. तो सॉइल क्लम्प्स जहाँ भी
माटीटा जदि टाण होकर रही जाए तो सेटा केमिति लाइटेन करा जाए लूजेन करा जाए एंड कौन कौन इंस्ट्रूमेंट से यूज हुए ये तीनटा विषय लिखा जाए प्ला हो एंड कल्टिवेटर ये तीनटार यूज करा जाए देखिए पारे हल लंगल पिक्चर कम्प्लीटली भल से विजिबल होउची आगुरु बलद यूज करा जाउतला आजिकल मेसीन बाहरी गलानी यूज ऑफ दैट बाय यूजिंग दैट मशीन माटी को चाष उपयोगी वर्तमान बना जाउची सो ए पिक्चर रे भल भाव प्ला विषय लिखा जाइए प्लाटी केमती होता है पिक्चर रे भल भाव एनालाइज कर लिखा जाइए प्ला शाफ्ट प्ला शेयर प्ला बीम एवरीथिंग ए पिक्चर रे क्लियरली रिप्रेजेंट करा जाइए सो आम प्ला केमती करा जाए से विषय वर्तमान पढ़ा सो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. So, ancient times when बहुत पुरातन कालरू आमे चाष पाई प्लार यूज करता सॉइल को चाष उपयोगी बनया पाई फर्टिलाइजर बा सार एथिरे ऐड करबा पाई रिमूविंग वीड्स माने विभिन्न प्रकार जिनस जोटा कि क्रॉप्स मानक ग्रोथ रे हार्मफुल हुए से सब जिनस को रिमूव करने यूज कर एंड दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स हॉर्सेस एंड कैमल्स स्पेशली आम मान एरिया रे बा विलेज रे जो मान चाष जमी थी दे नो कि एटा आमर ये बुल्स यूज करा जाए एंड राइट नाउ जेत कि मशीन आसीगला से गुड़ाक मशीन यूज करा जाउछि इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड एज प्लाउशेयर द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ is a long log of wood which is called as plough shaft आम एटा पिक्चर देखि पाछे plough shaft and plowshare दुईटा जाक जोटा कि माटी खोलिया पई यूज करा जाए the other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks तो जो बीमटा रही सेटा बलद मानकर बेकरे थोइकी प्लाउ को यूज करा जाए माटी खोलवाई आउ चाष करने सो देयर इज ए हैंडल at one end of the shaft the other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck one pair of the bulls and a man can easily operate the plough से कहला कि दुईटा बलद और गोटे मनीष दरकार पड़े प्लाउ को ऑपरेट करने द इंडिजिनियस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउएडेज वर्तमान कौन है वुड्र प्लाउ को यूज न करा जाए आयरन प्लाउ को यूज करा जाउछि सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आम पढ़िले प्लाउ जोटा कि आमर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे यूज करा जाए द सेकंड इंस्ट्रूमेंट होउछि कौन हो सो इट इज अ सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल सो वीड्स जोटा कि हार्मफुल फॉर क्रॉप ग्रोथ सेटा को रिमूव करबा पई आउ माटीटा को फसफसिया करने होर यूज करा जाए इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड एंड इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स सो यहाँ हूँ हर चित्र आम ये देखिपर दर पिक्चर ग्रिप हैंडल बेंट प्लेट रॉड बीम एटा केमती आ एनिमल्स मान द्वारा यहाँ को माटी रे यूज करा जाए सो दैट माटी को फसफसिया करा जाय परिबो वुड्स रिमूवल हो पार आ माटी को हेल्पफुली यूज करा जाय परिबो सो नेक्स्ट instrument is cultivator nowadays plowing is done by tractor driven cultivator आगुर कहि सारी मशीन वर्तमान यूज करा जाउची instead of using ancient methods of cultivation so वर्तमान tractor driven cultivator रा यूज करा जाउची the use of cultivator saves labor and time so बलद टाणीबारे जो कष्टटा हुए सेटा वर्तमान ट्रैक्टर ड्रिवेन कल्टिवेटर द्वारा कम होउची एंड जल्दी काम हो जाय पारची सो नेक्स्ट क्लास रे आमे सोइंग विषय रे पढ़िबा ओडिसा सबुठार बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाई श्रीकाय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पाई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर cbse ICSE ओडिया मीडियम स्टूडेंट क्लास 1 to class 10 and we provide classes for all subjects math science english social science hindi or sanskrit including english and spoken english
श्रीकाया एकेडमी लोकेशन हूँ न्यू एजी कॉलोनी पोखरीपुर भुवनेश्वर आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे भल भल एजुकेशनल वीडियोस आम चैनल श्रीकाया एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।